मोदी सरकारचा शेवटचा अर्थसंकल्प हा शेतकरी, मध्यमवर्गीय आणि कामगारांना बंपर लॉटरी देणारा ठरला. कारण पियुष गोयल यांनी शेतकरी, मध्यमवर्गीय आणि कामगारांना मोठा दिलासा देण्याचं काम केलंय. 5 लाखापर्यंतचं उत्पन्न करमुक्त करत मोदी सरकारनं मध्यमवर्गीयांना दिलासा दिलाय. 5 लाखापर्यंतच्या उत्पन्नावर आता कोणताही कर असणार नाही. पियुष गोयल यांनी ही घोषणा करताच सगळ्यांनी मोदी मोदी घोषणा दिल्या. कर प्रणालीमध्ये सरकार काय बदल करणार याकडे देशाचं लक्ष लागून राहिलं होतं. त्या अपेक्षेनुसार सर्वात मोठा दिलासा मोदी सरकारनं मध्यमवर्गीयांना दिलाय. Taxpayers having taxable annual income up to ₹5 lakhs will get full tax rebate. For the present, the existing rates of income tax will continue for FY 19-20 also. I propose the following changes. The setting up of Rashtriya Kamdhenu Ayog to upscale sustainable genetic upgradation of cow resources and to enhance production and productivity of cows. The Ayog will also look after effective implementation of laws and welfare schemes for cows. गौ माता के सम्मान में और गौ माता के लिए इस सरकार कभी पीछे नहीं हटेगी. जो जरूरत पड़ेगी उसको प्रावधान करेगी. Half of India's GDP comes from the sweat and toil of 42 crore workers in the unorganized sector, working as street vendors, rickshaw pullers, construction workers, rag pickers, agricultural workers, BD workers, handloom, leather, numerous other industries. घरेलू कामगार भी बड़ी संख्या में काम कर रहे हैं. We must provide them a comprehensive social security coverage for their old age. Therefore, in addition to the health coverage provided under Ayushman Bharat and life and disability coverage provided under Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana and Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana, our government proposes to launch a mega pension yojana, namely Pradhan Mantri Shram Yogi Man Dhan. On behalf of all the people of India and on behalf of our government, I would first like to thank all our taxpayers for their valuable contribution to nation building and for providing a better quality life to the poor and marginalized sections of society. Your tax helps provide dignity to our sisters and mothers with toilets and cooking gas connections. Your tax pays for the electricity connections to the poor who have lived in darkness for generations. The tax you pay will provide health care to 50 crore brothers and sisters and children. It is you who is ensuring. It is you who is ensuring respect, dignity, and a secure future to our retired Jawans through one rank, one pension. Thank you, taxpayers. Our government has now approved a path-breaking technology-intensive project to transform the income tax department into a more assessee-friendly one. All returns will be processed in 24 hours and refunds issued simultaneously. Within the next 2 years, और ये बहुत important बात है, within the next 2 years, almost all verification and assessment of returns selected for scrutiny also will be done electronically through an anonymized back office manned by tax experts and officials without any personal interface between the taxpayer and the tax officer.
आगे चल के स्क्रूटनी के लिए भी आपको दफ्तर नहीं जाना पड़ेगा, और किसका स्क्रूटनी हो रही है और कौन अफसर है ये दोनों को एक दूसरे का परिचय नहीं मालूम पड़ेगा, वो कंप्यूटर के थ्रू एनोनिमाइज हो जाए। अभी हाल में आप सब ने शायद देखी हो, मेरे को तो उरी पिक्चर देखने का सौभाग्य मिला। जो मजा आया, जो जोश था उस हॉल के अंदर, उरी देखने के बाद कुछ तो सिनेमा हॉल्स के प्रति भी और सिनेमा देखने वाले सभी जनता के प्रति संवेदना की भावना स्वाभाविक रूप से आती है। सिनेमा गोअर्स जिनको अलग अलग टैक्स के रेट्स होते थे और कई राज्यों में तो 50% से अधिक टैक्स लगता था, अब साधारणतः अधिकांश जो सिनेमा हॉल्स हैं उसमें मात्र 12% GST लगता है।